हेलो फ्रेंड्स, हम हमारे आज के सेशन में देखने वाले हैं सुपरवाइज लर्निंग का फोर्थ एल्गोरिथम, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। इससे पहले हमने देखा लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री। अब हम फोर्थ देखने वाले रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है कि हमारे जो डेटा सेट है वो डेटा सेट को हम क्या करें, सब डिसीजन ट्री में डिवाइड करते हैं। फिर उन सबका रिजल्ट कैलकुलेट करके एक उनका उसका एवरेज निकाल के एक फाइनल रिजल्ट हम शो करते हैं। उसको कहा जाता है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। What is random forest algorithm? Random forest algorithm is a powerful pre-learning technique which is machine learning branch, which is used to on the basis of decision tree algorithm. It works by creating number of decision trees during training phase. In a random forest algorithm वो क्या करता है कि नंबर ऑफ डिसीजन ट्री को क्रिएट करता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ईच ट्री इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रैंडम सबसेट ऑफ डेटा। उसको हम क्या करते हैं, जो भी ट्री हमारी कंस्ट्रक्ट होती है उसको रैंडम डेटा सेट कहा जाता है। सेट टू मेजर रैंडम सबसेट ऑफ फीचर। इसका यूज करके क्या करते हैं, रैंडम सब फीचर्स को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। इन दिस पार्टीशन in each partition, the model randomness introduces variability among individual trees, reducing the risk of overfitting and improve overall prediction performance. अब जो इसका क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट एक बेस्ट वे है कि वो नंबर ऑफ डिसीजन ट्री को क्रिएट करता है और डिसीजन ट्री क्रिएट होने के बाद क्या करता है, उसका हमें एक एवरेज वैल्यू देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ओवरफिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। In prediction, the algorithm aggregate the result of all trees either by OT for classification task or by averaging for regression task. This collaborative decision-making process, supported by multiple trees with their insight, provide example, stable and precise results. Random forests are widely used for classification and regression functions, which known for their ability to handle complex data, reduce overfitting, and provide reliable forecast in different environments. What are assemble learning models? जिसके बाद देखते हैं what is assemble learning. Assemble learning क्या है? तो assemble learning model work just like group of diverse expert teaming up the make decisions. Think of them as a bunch of friends with different strengths tracking a problem together. Picture it as a group of friends with different skills working on project. Each friend excels in a particular area and by combining their strength, they create a more robust solution than any individual cloud achieve alone. Similarly, in assemble learning, different models, often of the same type, are different types team up to enhance predictive performance. It's all about leveraging the collective wisdom of the group of overcome individual limitations and make more informed decisions. In various machine learning tasks, some popular assemble learning models include XGBoost, ADBoost, Light GBS, रैंडम फॉरेस्ट, बैगिंग, वोटिंग, एक्स्ट्रा। ये सारी जो टेक्निक होते हैं हमारे असेंबल लर्निंग में। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज बैगिंग एंड बूस्टिंग। बैगिंग इज असेंबल लर्निंग मॉडल where multiple weak models are trained on different subset of training data। जो हमारे बैगिंग क्या होते हैं, जब पे जो हमारे वीक मॉडल्स होते हैं उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब डेटा यूज करके उसको ट्रेन करते हैं। ईच सबसेट इज सैंपल विथ रिप्लेसमेंट एंड प्रिडिक्शन। जो भी हमारा सबसेट होता है उसको क्या करते हैं, सैंपल डेटा से रिप्लेस करते हैं। प्रिडिक्ट इन मेड बाय एवरेजिंग प्रिडिक्शन and weak models of regression problem and consider maturity odds of classification problem. Next हमारा what is boosting. Boosting is a multiple based model sequentially. Boosting is trains multiple based models sequentially. In this method, each model tries to correct the errors. Each model is trying to correct the errors made by previous models. Made by previous models, each model is trained on modified version of the dataset. ये जो मॉडल है, each model is trained on modified version of dataset. The instance that we where we the instance that we are miscast
classified by the previous models are given overweight. The financial prediction is made by weighted voting. नेक्स्ट देखते हैं एल्गोरिदम के टिप्स हमें कौन से एल्गोरिदम टेस्ट वहां पे फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्ट रैंडम के डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट। हम जो हमारे मॉडल को ट्रेन दे रहे हैं उसके लिए हमें के नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होता है। देन बिल्ड द डिसीजन ट्री एसोसिएटेड विद सिलेक्टेड डेटा पॉइंट्स। जितने भी हमने सिलेक्टेड पॉइंट्स किए हैं के पॉइंट्स उतने हमारे क्या होंगे डिसीजन ट्री वहां पे क्रिएट होंगे। स्टेप 3 use the number of and decisions for decision tree that what you want to build। जो हमारे के हमने नए डिसीजन सिलेक्ट किए वो क्या करेगा उतने डिसीजन ट्री को बिल्ड करेगा। जो हमारी स्टेप फर्स्ट एंड सेकेंड है वो कंटिन्यूसली रिपीट होती जाएगी अंटिल हमारा डेटा सेट खत्म। स्टेप फिफ्थ में क्या होगा फॉर न्यू डेटा पॉइंट्स फाइंड द प्रेडिक्शन ऑफ each decision tree and assign the new point to the category that win maturity votes। वोटिंग के अकॉर्डिंग हमारे जो न्यू डेटा पॉइंट्स है वो हमारे डेटा सेट में सब डेटा सेट्स हमने जो क्रिएट किए थे वहां पे वो ऐड होते जाएंगे। हाउ डज रैंडम फॉरेस्ट वर्क। रैंडम फॉरेस्ट कैसे वर्क करता है। द रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम वर्क इन सेवरल स्टेप्स व्हिच आर डिस्कस बिलो। एसेंबल लर्निंग डिसीजन ट्री पे वर्क करता है वो रैंडम फीचर सिलेक्शन पे वर्क करता है। बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग और बैगिंग पर वर्क करता है। डिसीजन मेकिंग एंड आउटिंग पे वर्क करता है। ए चीजों पे वो वर्क करता है। पहले देखते हैं हम असेंबल ऑफ डिसीजन ट्री। Random forest leverage the power of ensemble learning by constructing an army of decision tree. The trees are like individual experts, each specializing in a particular aspect of data. Importantly, they operate independently, minimizing the risk of the model being overly influenced by the influence of single tree. Random feature selection to ensure that each data decision tree is assembled, bring a unique perspective. Random forest employs random forest selection during the training of each tree. A random subset of features is chosen. This randomness ensures that each tree focus on different aspect of data. Forecasting driver set of prediction within the ensemble. Bootstrap aggregating or bagging. The technique of bagging is concentrate of random forest training strategy, which involves the creating multiple bootstrap samples from the original dataset, allowing instance to be sampled to with replacement. The result is different subset of data for each decision tree, introducing variability of training process and making the model more robust. Decision making and routing. When it comes to making predictions, each decision tree in random forest casts its vote. For classification tasks, the final prediction is determined by the mode. The most frequent prediction across all the trees, it regression task, the average of individual tree predictions is taken. The, the internal voting mechanism ensures a balanced and collective decision making process। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे की फीचर्स ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट की कौन कौन सी की फीचर्स है। फर्स्ट है इसका हाई प्रोडक्टिव एक्यूरेसी। इमेजिन रैंडम फॉरेस्ट आर द टीम ऑफ डिसीजन मेकिंग विजार्ड। ईच विजार्ड और जो हमारे डिसीजन ट्री है लुक एट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम टुगेदर। दे हैव देयर इनसाइट इनटू पावरफुल प्रेडिक्शन ट्रांसपेरेंसी। The term work this term work often result is more accurate model than what a single wizard could be achieved। Resistance second हमारा resistance to overfitting। Random forest is like cool head mentor guiding inappropriate decision tree instead of letting each appropriate memories every detail of training it encourage or more well-rounded understanding। This approach helps prevent getting too caught up with training data, which make the model less prone to overfitting. Large dataset handling. Dealing with the mountain of data, random forest tackles it like a second explorer.
With a team of helpers, dissenters, each helper take on a part of dataset. During that the expedition is not only thorough but also surprisingly quick. Variable importance assessment. Think of random forest is a detective at a crime scene figuring out which clue matter the most. It assists the importance of each clue is in solving the case, helping you focus on the key element that drives prediction. Built-in cross-validation. Random forest is like having a personal coach that help you in check at it train each decision tree. It also set aside secret group of cases out of bag for testing. This built-in validation ensure your model does not just as the training but also perform well on new challenges. Handling missing values. Life is full of uncertain, just like dataset with missing values. Random forest is the period who adapt the situation, making predictions using the information available. It does not get flustered by missing piece. Instead it focus on what it can be confidently tell us. Personalizing for speed. Random forest is your time-saving buddy. Future of dysentery as worker tracking piece of puzzles simultaneously. This parallel approach taps into the power of modern tech, making the whole process faster, more efficient for handling large-scale projects. नेक्स्ट देखते हैं हम रैंडम फॉरेस्ट वर्सेस अदर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में क्या है। पहले देखते हैं फीचर्स रैंडम फॉरेस्ट और अदर मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल अप्रोच running random forest utilize a symbol of dysentery combining their output for prediction fostering robustness and accuracy. Other algorithms typically relies on the single model that is linear regression support vector machine without a symbol approach potentially leading less reliance against noise. Overfitting resistance. Resistance to overfitting due to aggregation of diverse dysentery preventing memories of training data. In other algorithms, some algorithms may be prone to overfitting, especially when dealing with complex dataset as they may explicitly adapt to a training noise. Handling of missing data. Xhabit relies in handling missing values by leveraging available features for predicting, contributing to practically in real-world scenarios. When other algorithms may be require imputation or elimination of missing data, potentially impact model training and performance. Variable importance. Provide a built-in mechanism for accessing variables importance, adding in feature selection and interpretation of influential factors. Many algorithms may lack or explicit features, important assessment making it challenging to identify accurate variables for prediction. Personalization potential. Capabilities on personalization enabling the simulation training of dysentery, resulting in faster computation for large datasets. Some algorithms may have limited parallelization capabilities, potentially leading to longer training of extensive dataset. नेक्स्ट देखते हैं हमारे एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम है वो यूज कहाँ पे यूज किया जाता है। फर्स्ट है इसका फाइनेंस विजर्ड्स। इमेजिन रैंडम फॉरेस्ट एज आवर फाइनेंशियल सुपरहिरो dividing into the world of credit scoring. It is mission to determine if you are crediting superior or well not much. With, with a knack of handling financial data and sidestepping overfitting issues. It's like having guardian angel for robust risk assessment. Health detective. In healthcare, random first turns into small medical Sherlock Holmes, armed with the ability to decode medical jargon, patient records, and test results, is not just predicting outcome. It especially assists doctors in solving mysteries of patient health. Environment guardian. Poor in nature and the forest transform into environmental superhero with the power of disappear satellite. Imagine the and brave noise data.
it become go to hero for tasks like tracking land cover changes and safeguarding against potential deforestation, standing in the protector of our green space. Digital bodyguard. In the digital recam, random forest becomes our Vilite guardian against online tracking. It is like a super cyber cell amazing our digital footstep for any hint of suspicious activity. It resembles approach in a skin to having a team of cyber detectives so spotting suitable deviations that scream flood alert. It is not just protecting our online transactions, it is our digital bodyguard. प्रिपेयरिंग डेटा फॉर रैंडम फॉरेस्ट मॉडलिंग जब हमें मॉडल को ट्रेन करते हैं उसके लिए हमें डेटा कैसा होना चाहिए इंश्योर दैट हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज हमें हैंडल करनी पड़ेगी जैसे कि बिहाइंड beginning by addressing by any missing value in dataset technically techniques like imputation or removal of instant with missing values ensure a complete and reliable input for the random forest. Encoding categorical variables. Random forests require numerical input, so categorical variables need to be encoded. Technique like one lost encoding or label encoding transform categorical features into a format suitable for algorithms, scaling and normalization. While a random forest is not sensitive to feature scaling, normalizing numerical features can still contribute to more efficient training process and improve coverage. Feature selection. Access the importance of features within the dataset. Random forests inherently provide a feature of importance score, adding in the selection of relevant features for modeling training. Addressing imbalanced data. If dealing with imbalanced classes, implement technique like addressing class weight or employing sampling methods to ensure a balanced representation during the ट्रेनिंग नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है टाइटनिंग डेटा सेट को मैंने फर्स्टली इंपोर्ट किया पांडास को सेकंड मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट डेटा फॉर्मेट टेस्ट स्प्लिट कर रहा है 10 टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट किया देन मैंने रैंडम फॉरेस्ट को यहाँ पे क्या किया फ्रॉम एसक्यूएल डॉट सिंपल लर्निंग को इंपोर्ट करके मैंने वहां से रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को इंपोर्ट किया फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर को इंपोर्ट किया क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को इंपोर्ट किया कंफ्यूजन मैट्रिक्स को मैंने वहाँ पे इंपोर्ट किया क्योंकि मुझे ओ भी चाहिए अगर मुझे कोई वार्निंग आती तो ओ भी चाहिए वार्निंग डॉट फिल्टर वार्निंग्स उसको मैंने इग्नोर किया लोड द टाइटैनिक डेटा सेट यूआरएल मैंने यहाँ पे मैं जो भी डेटा सेट पास किया है मैंने उसका मेरे जो भी डेटा सेट है मैंने गूगल से एक डेटा सेट उठाया है उसका यूआरएल मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है टाइटैनिक डेटा सेट इक्वल टू पीडी डॉट रीड सीएसवी फाइल में वो यूआरएल क्या किया मैंने लोड कर लिया देन ड्रॉप विथ मिसिंग टारगेट वैल्यू जो भी उसकी मिसिंग वैल्यू से मैंने वो क्या कर दिया ड्रॉप कर दिया टाइटनिंग डेटा इक्वल टू सब ड्रॉप यानी सबसेट इक्वल टू सुपर व्यू जो भी उसमें कॉलम है उसको मैंने क्या कर दिया वहाँ पे उसकी जो मेरी मिसिंग वैल्यूज है मैंने उसको ड्रॉप कर दिया देन रिलेवेंट फीचर्स को मैंने टारगेट के लिए सिलेक्ट कर लिया मैंने टारगेट मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हुए वहाँ पे पी क्लास सेक्स एज एस आई बी एस पी 5 फाइल और मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल पे लिया है मैंने सर्वाइव देन मैंने वो डेटा को क्या किया मैंने कन्वर्ट किया है 0 और 1 में कि वो कौन है देन हैंडल मिसिंग वैल्यूज हैंडल करने को मैंने वहाँ पे लिया एक्सलॉग लॉग डॉट जो भी वैल्यूज है मैंने उसको फिल एन से फिल किया देन मुझे मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है तो उसके लिए मैंने वैल्यूज फिल किए देन वहाँ पे मैंने मीडियन का उसका कैलकुलेट कर लिया देन मैंने क्या किया मैंने डेटा को स्प्लिट किया तो एक्सटेंड वाइट एंड वाइट टेस्ट 10 टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई टेस्ट साइज 0.2 रैंडम टेस्ट 40 तो देन मैंने यहाँ पे मैंने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को कॉल किया नेक्स्ट स्टेप में मेरे वहाँ पे वेरिएबल के साथ मैंने उसको कॉल किया रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर
तो मैंने यहाँ पे यानी बस रखे मैंने 100 और मैंने रैंडम सीरीज रखी है यहाँ पे 42। मेरा ये मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो गया। मुझे अब प्रेडिक्शन चाहिए। वाई प्रेडिक्शन इक्वल आर एफ डॉट क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट एक्सप्रेस को मैंने वहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया। मैंने मुझे मॉडल यूविलेट करना है, उसके पहले मैं वहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर को कैलकुलेट करूँगी। एक्यूरेसी इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्शन क्लासिफिकेशन आरएपी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्शन किया। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी मैंने वहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। देखिए मेरा जब मैंने उसको ब्रीड किया एक्यूरेसी को क्लासिफिकेशन रिपोर्ट पर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को, यहाँ पे मुझे मेरा ये एक्यूरेसी मेरी 0.80%। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है मेरा ये, यहाँ पे मैंने सारे दिए। प्रेसिजन कितना है मेरा, रिकॉल कितना है, एफ1 स्क्वायर कितना है मेरा, सारे मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, मुझे प्रिंट हो रहा है। प्रिंट हो गया। अब मुझे इसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज के यूज करते हैं मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज करते हैं और उसके साथ यूज करूंगी मैं। मुझे अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को के साथ करना है तो इसलिए मुझे C1 चाहिए। तो मैंने C1 को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया या फिर इंपोर्ट कर लिया। फिर मैंने फीचर इंपोर्टर्स पीडी डॉट सीरीज में जो भी मुझे फीचर चाहिए इसके आरएफ क्लासिफायर डॉट फीचर इंपोर्टर्स इंडेक्स एक्स डॉट कॉलम्स पीएलटी डॉट फिगर साइज इक्वल 8.85। देन एसएमएस मैंने यहाँ पे बार प्लॉट के साथ उसको प्लॉट किया है। एक्स इक्वल टू फीचर इंपोर्टेंस, वाई इक्वल टू फीचर इंपोर्टेंस डॉट इंडेक्स, पीएलटी डॉट टाइटल फीचर इंपोर्टेंस इन टाइटेनिक सेरेबल प्रेडिक्शन, और मैंने वहाँ पे उसे यहाँ पे शो कर दिया। पीएलटी डॉट शो से मैंने वो सारे यहाँ पे शो कर दिए। ऐसा मेरा ग्राफ यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे शो हो रहा है जिसका मैंने रैंडम फॉरेस्ट का इम्प्लीमेंट किया यूजिंग बार प्लॉट। आज हमने देखा कि रैंडम फॉरेस्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आती है मैंने यहाँ पे यूज किया था मेरे टाइटैनिक डेटा सेट को। आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट का हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।